But this is an appeal. This is a revision. Rejecting my application under Order 7 Rule 11. The impugned order is not Annexure A4 and the plaint is Annexure A1. ये इम्प्रूव ऑर्डर उसके साथ में लगाना शुरू कर दीजिए आप लोग. Well, in fact, it should be because impugned order need not be annexed marked as annexure. It has to be filed along with the memo of revision. कोई आपको ये कहता है कि ये ऐसा करो. That was the practice and that is the rule in fact. That impugned order should be filed along with the memo of revision. की तो है ये. I did not draft it. I did not file it. अच्छा. You have come later on. Yes. My lord, may kindly come to page 24 here. At Annexure A4. Impugned order. Yes, ma'am. And by this impugned order, the trial court has rejected my application under Order 7 Rule 11. You are? My objection. You are? I am for defendant number 1 in the suit. And the suit has been filed for the relief of declaration and permanent injunction. And in that relief for... Where is the plaint? The plaint is Annexure A1. That is at page, start from page 7. And there are two plaintiffs, Subhash and Utkarsh. Both claim that they are the beneficiaries under the will written by Mr. Chandramul Avasthi, father of defendant, plaintiff number 1 and grandfather of plaintiff number 2. And on the basis of that, Chandramul Avasthi was the father of Subhash, that is plaintiff number 1. Chandramul Avasthi के कितने बच्चे हैं? 2 sons and 1 daughter. नाम बताएं. Arun Avasthi, Subhash Avasthi and Renuka, daughter. The Subhash जो है plaintiff number 1 है. Plaintiff number 1. Utkarsh, the plaintiff number 2, Utkarsh is son of Subhash. का बेटा हो गया. अरुण कौन है? Arun is defendant number 1. रेणुका. And Renuka is defendant number 2. अब बताइए. So far as Subhash and Utkarsh are concerned, who are the plaintiff in this case, they are claiming that by virtue of a will written by Chandramul, they are the beneficiaries in that will for the properties mentioned therein. रेणुका के पक्ष में बिल है. No, will is, they are claiming that will is in favor of Subhash and Utkarsh, the plaintiffs. The bill is in favor of Subhash and Utkarsh. Both. And in the plaint, what they claim is that they have received separate properties under the will. And those separate properties may be declared. And the relief clause is... Separate property means? Means properties left by Chandramul in his will. One in favor of Subhash, one in favor of Utkarsh. So those properties, they may be declared belonging to them. मतलब they may be declared over on the basis of on the basis of will. If no will is there, then all are. All are entitled. Yes. They are claiming will and they are seeking declaration of their exclusive owner. Yes. Then. And then what the claim is, the relief clause in the plaint is, स्वत्व की घोषणा की डिक्री दी जाए कि निम्नलिखित विवादित संपत्ति के स्वत्वाधिकारी वसीयत दिनांक इतने के अनुसार वादीगण है. एंड द सेकेंड इज स्थायी निषेधाज्ञा. निम्न विवादित संपत्ति के बारे में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री दी जाए कि प्रतिवादीगण इसमें वादीगण के आधिपत्य में स्वयं या प्रतिनिधि द्वारा कोई व्यवधान उत्पन्न न करें. Now, my lord, may kindly see the para. What was the objection in 711? Para 5 may kindly be seen there. Para 5 of plaint? Yes, ma'am. Here it is said
एट पेज 9, यह कि जो पूर्व में वसीयत को बदली परिस्थितियों के कारण अंतिम वसीयतनामे में निरस्त कर शून्य घोषित की गई, वो निम्नानुसार है. Now 4 wills are mentioned, and on the basis of the 5th will, what they are claiming is that they are the title holders of the property. There is no relief clause so far as the will is concerned that this will be declared as the genuine will, original will. There is no probate. But so far as probate objection in my 711 application is concerned, for that I concede that in MP probate is not necessary for Hindus. But under the given circumstance, का आपत्ति क्या है वही तो पूछ रहा हूँ. Lord, in 711 Lord, my objection is regarding valuation. That valuation of the plane is not proper. You come to your 711. Yes, yes, Lord. Para 18 में, para 14 में, para 18 में kindly be seen, Lord, at page 16. Para 18. Yes, Lord. यह कि वाद मूल्य न्याय शुल्क एवं क्षेत्राधिकार के लिए वादीगण घोषणा हेतु 500 रुपए तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 200 रुपए आकलित करते हैं तथा कुल. ये 7-11 पढ़िए, पेज नंबर 20. पेज नंबर 20. वाद पत्र के अनुसार दो पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा एक ही वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है. दोनों वादीगण विधि की दृष्टि में पृथक पृथक व्यक्तियों का स्टेटस रखते हैं. ऐसी स्थिति में दो वादियों द्वारा एक ही वाद प्रचलन योग्य नहीं है. दोनों ही बात, ऐसा कोई लॉ है कि नहीं है, आप बताइए. My humble submission नहीं, is so that far as 711 is concerned, क्या दो वादी एक दावा नहीं लगा, दोनों का डीएनए एक ही है. दोनों का डीएनए एक ही है, बट दे आर क्लेमिंग रिलीफ फॉर देयर सेपरेट प्रॉपर्टीज. सो देयरफॉर चलो और मुझे बता दीजिए 7-11 में खारिज हो सकता है, मैं कर देता हूँ. ऑर्डर 2 रूल 3 में काइंडली, ये सब बाद में आएंगे ना, 2, 3. अभी तो जो है अभी अपन बन पे ही हैं. चलो आगे चलो. दोनों ही आपकी बहस सुनकर सीखना चाह रहे हैं, इसमें कौन सा ऐसा बढ़िया बात है 7-11 की, बता दीजिए. दोनों ही वादीगण पहला वाला छोड़ रहे हैं, पहले वाला आर्गुमेंट छोड़ रहे हैं ना. 7-11 का बंद. नहीं पकड़ रहे हो तो जजमेंट बताओ. नहीं बन के संबंध में लाए कोई जजमेंट, क्लियर कर दे देना, मतलब घुमा फिराने वाला नहीं है तो रहने दीजिए. मेरे पास है आपके खिलाफ का, इसलिए कह रहा हूँ. There is no clear cut judgment, but सर ये अभी 7-11 की स्टेज में इस पॉइंट पे दावा खारिज नहीं हो सकता. बिकॉज एक जजमेंट मेरे को मिला था, लेकिन वो किताब रात को मिल नहीं पाई मुझे. और डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन वाली बात आ जाएगी ना इसमें, तो डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन पे आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट है मेरे पास. one person can file a suit on different causes of action. मैं कह रहा हूँ डिफरेंट पर्संस फॉर डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन कैन फाइल और नॉट, दिस विल नॉट कम अंडर 711. ये मेरा कहना है. This can be considered later on. But my humble submission is that under order 7 rule 11, if there are multiple plaintiffs, आपके खिलाफ जजमेंट है तो आप अपने फेवर का तो लाइए. चलिए नेक्स्ट. ऐसा वैसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है. हाँ 2 पढ़िए 2. दोनों ही वादीगण द्वारा पृथक पृथक न्याय शुल्क भी देय है, जिसके अभाव में भी दावा प्रचलन योग्य नहीं है. Now both the persons कितना देना चाहिए उनको? According to me, they ought to have valued their suit according to their own properties. कैसे तय होगी? They ought to have valued the suit for the properties received by plaintiff number 1 and plaintiff number 2 separately in the will. हाँ तो वैल्यूएशन लिखी है क्या बिल में? Yes. बिल में लिखी है वैल्यूएशन. Bill has not been filed. That I would like to file. नहीं उसमें होती भी नहीं है वैल्यूएशन, नहीं होती. नॉर्मली वैल्यूएशन नहीं होती. नॉर्मली नहीं, 100% होती है. नहीं कभी कभी होती. तो वो फिर ऐसा लगता है किसी अनजाने ने लिख दी बिल. आप ऐसा विद्वान कोई लिखेगा तो उसमें वैल्यूएशन नहीं लिखेगा. वो तो फिर ऐसा होगा जिसको आता ही नहीं है वो लिखेगा तो फिर तो उल्टा पुल्टा लगेगा. कभी कभी मिलता है. कभी नहीं, हमें कभी नहीं मिला. हाँ गिफ्ट में मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता. ना मिलना चाहिए, इलीगल हो जाएगा वो. चलिए पृथक पृथक न्याय शुल्क इसलिए देय होगा क्योंकि, हाँ देंगे ना. वैल्यूएशन तो बताइए. वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैसे तय होगी आज 7-11 की स्टेज पर? कैसे तय होगी? अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू वुड बी डिटरमिन्ड. बिकॉज नहीं कैसे, जस्ट आई एम आस्किंग. मैं आपकी कोई बात काट नहीं रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ
आज मान लो जज साहब के सामने ये आपत्ति आप करते हैं, तो जज साहब आज मार्केट वैल्यूएशन 7/11 की स्टेज पे कैसे तय करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्लान डेवलपमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। वो तो जो लिखा है उतना ही पढ़ना पड़ेगा। यस। अब जो ये आपत्ति जब आप लेंगे कि साहब दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यूएशन, देन you will file the written statement taking objection and issue will be framed कि whether the suit has been valued properly or not and whether the court fee has been properly paid or not। आज आज कोर्ट कैसे तय करेगी? कुछ कोर्ट्स ने उसको तय करना शुरू कर दिया है। वो होती है ना लिस्ट, कलेक्टर वाली गाइडलाइन, दैट इज नॉट, वो गलत है, दैट इज नॉट करेक्ट। जब वो इनकरेक्ट है तो फिर तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। Lord, my humble submission is because the plaintiff has not said so in so many words in the plaint that it is the market value. So court can insist that you value ये एग्रीकल्चर लैंड है या हाउस प्रॉपर्टी है? हाउस प्रॉपर्टी है मेरा, it's an urban property. You raise objection in the written statement। भाई देखिए इसने जो लिखा था, जो अभी आपने पढ़ा था पेज नंबर 22, जो पढ़ा था आपने 18 स्वत्व घोषणा स्थायी से दाग गया। स्वत्व घोषणा में उसने जो जमीन लिखी है, 18 में जो लिखा है यह कि वाद मूल्य न्याय शुल्क एवं क्षेत्राधिकार के लिए वादी को घोषणा हेतु 500 रुपए तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए 200 रुपए आकलित करते हैं। If we see order 7 rule 1, that is not, it is not complying 7 rule 1. That is my humble submission. तो कैसे क्या ऑर्डर 6 और 7 में जो कुछ भी लिखा है उसके आधार पर 7/11 में दावा खारिज हो सकता है? In case it is not complying the requirements of order 7 rule 1. ये सारे प्रोसीजरल हैं। ये इसमें ये 7/11 में आप इनको नहीं लेके, मैंडेटरी नहीं है कि साहब। My humble submission is that so far as the valuation and court fee part is concerned, for that reason order 7 rule 1 has to be seen. And on that basis, the court can certainly reject the plaint under order. You are right, लेकिन अभी कैसे तय करेगी कोर्ट? भाई उसने लिख दिया for the purpose of consideration of 7 rule 11, the court has to read the plaint, and from reading of the plaint itself, it is clear that he has valued the property contrary to the averments made in the plaint or contrary to the documents filed in support of the plaint। तो कोर्ट उसको कह सकती है तुमने खुद ने ऐसा कागज पेश किया है दावे के साथ इसके अंदर 10 लाख रुपए वैल्यूएशन आ रही है, यू पुट दैट वैल्यूएशन। My lord, may kindly see order 7 rule 1 में that may kindly be seen। आप ले सकते हैं इस पर टाइम आराम से, मतलब टाइम मेरा उस पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन के आधार पर कोई भी जजमेंट नहीं है कि 7/11 की स्टेज पर कोर्ट दावा खारिज करेगी जब तक कोर्ट के सामने वैल्यूएशन क्लियर ना हो। जरा सीपीसी देना। Order 7 rule 1, I may kindly be seen. A statement of the value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and of court fees so far as the case admits. So here there is no valuation of the subject matter of the suit. There are various properties mentioned in the relief clause and in the plaint, but there is no valuation, separate valuation of separate properties. There is nothing like that. And rule 1 starts from the plaint shall contain the following particulars, and those particulars are missing. Plaintiff has purposefully omitted to do so.
प्राइम फेसी दिख रहा है कि कम की है, लेकिन अभी आप तय कैसे करें, उससे कितना मांगे? मतलब कम या ज्यादा की बात तो बाद में आएगी। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि plaintiffs have not valued in accordance with 7 rule 1. They ought to have valued the relief of declaration. किया है उन्होंने, For this, 500 रुपये कर दिया। no, for the separate property, because properties are too many. When different properties are there, and one set of properties is for the benefit of plaintiff number one, another set of property is for benefit of plaintiff number two. So they ought to have valued it accordingly. That they have not done. इसमें क्यों उलझते हो? अपनी वसीयत को, उसकी वसीयत का खंडन करो, जल्दी से आगे बढ़ो, प्रॉपर्टी लो। 500 की जगह 1000 दे देगा, 1000 की जगह 2000 दे देगा, क्या फर्क पड़ेगा? उसका वसीयत के आधार पर जो वो एंजॉय कर रहा है। But in fact, the pecuniary jurisdiction would change if the proper valuation is कुछ done. नहीं होगा, अब तो 1 करोड़ रुपए हो गया सिविल जज का। Pecuniary properties are valued for more than 10 crores. आज नहीं तय हो सकता ये। But proper valuation has not been made. That is my humble. हाँ, तो कैसे तय होगा? प्रॉपर इम्प्रॉपर वैल्यूएशन 7/11 की स्टेज पे दावा खारिज नहीं होगा। So far as valuation is concerned, how what quantum would be there, that is immaterial. But separate valuation for separate set of plaintiffs has to be made for separate properties. Suppose if I seek a declaration for 6 sale deeds. आज वो सेल डीड का नहीं है ना ये। It is not for this. सेल डीड का होता That means I am required to value the suit for each sale deed. Here also he is claiming through the will, and when both the plaintiffs are claiming through the will, and they are not the joint beneficiaries, they are beneficiaries in their own individual right. One set of properties has been bequeathed to plaintiff number one, another set of properties plaintiff number two. अच्छा, आपका दावा कब्जे का अलग चल रहा है। That is pending separate. कब्जे में बैठे हुए हैं वो, उसके हिसाब से उसने वैल्यूएशन कर दिया। 500 हो 1000 हो, उसके लिए काय के लिए मुकदमे को लंबा कर, तो अपनी आपत्ति दीजिए जवाब दावे में। May I draw your lordship's kind attention to बता दीजिए। EIR 2013 Allahabad जी, page 41. That is a DB decision, right? And I'm 2000 इलाहाबाद, 2014 इलाहाबाद, 2013 EIR 2013 Allahabad page 41. हाँ, Para 12, right? In the instant case, both the wills mentioned by the plaintiffs, one in their favor and the other for the defendant, in the plaint were allegedly executed by Srimati Punaya Kirti Sharma, who has died on 11/12/2004. After the death of parties, mother Srimati Punaya Kirti Sharma, the will executed by her becomes operative. Therefore, in view of the above legal position, the will is an instrument securing property having money value. So, court fee would be payable according to section 74A and not under article 17(3) of the Court Fees Act. ठीक है। Okay. This civil division has been preferred by defendant number 1, challenging the order dated तो 19 की सुनवाई में आवाई है। Yes. और नीचे क्या क्या हो चुका अभी तक? पेंडिंग है मेरा, मैंने कल ही पता होगा, कहाँ तक पहुंच गया? कहाँ, ये मैं नहीं पूछ पाया। ये भी तो एक काम बढ़ जाता है ना। ये कोई काम क्या लगा? चैलेंजिंग द ऑर्डर डेटेड ऑर्डर डेटेड 2/3/2019 2/3/2019 passed by second civil judge class 1 second civil judge class 1 Baitul
in civil suit number 17/2019, whereby Learned Court below has dismissed the application under order 7/11 CPC filed by applicant holding defendant number 1 in a learned counsel for the applicant submit that on the basis of two wills, the plaintiffs Subhas Avasthi and Utkarsh Avasthi have instituted the suit. Have instituted one and single suit therefore the suit filed by two plaintiffs in respect of separate properties is not maintainable, and the plaintiffs have not properly valued the suit and paid the requisite court fee, whereas the property in question is having market value more than 10 crore, but the My lord, may I submit? I may be permitted to withdraw this revision with liberty to raise all these grounds in the memo in my WS. After argument at length, learned counsel for the petitioner who applicant prays for withdrawal of this civil revision with liberty to raise all the grounds of this civil revision of the order 7/11 CPC in the written statement from if not filed or if already not filed. By now it must have been filed, so therefore I may be permitted to amend my written statement. Otherwise, if not already filed, reasonable is accepted, and this civil revision is permitted to be withdrawn with the forfeited liberty in interim application if any shall stand dismissed.